Hi there, this is me, Neev Goswami, welcoming you all in a brand new episode of मैच की बात फुटबॉल एडिशन जहां पर फुटबॉल वर्ल्ड से जुड़ी हुई होगी हर एक बात विद अ वेरी ओन ईश खेल. So Ish, what's up? Hi Neve, how are you doing? Absolutely great. Ish, how are I, you? I'll take this moment yeah, before we start today's episode. So this is a breaking news. Everybody knows this that Diogo Jota, who is 28 years old, him and his brother died in the car accident, and he was a Portuguese legend. He used to play for Liverpool, usse pehle Wolves. So I just wanted to cover this, and I wanted to pay respect to his families, all the fans of his, and may he rest in peace, and may God give strength to his family. Yeah. So starting on a slightly sad note, but yeah, it was important for all of our football community to pay respects to him. Absolutely, indeed, it's an important thing. But ईश इसी के साथ अब आगे जो बढ़ते हैं कहते थे शो इज मस्ट गो ऑन तो Yeah, वो अभी भी जारी रहेगा लेकिन अगर हम स्टार्ट कर सकें तो करते हैं शुरुआत इस मैच के बिल्कुल बाद बिल्कुल, फुटबॉल एडिशन की. तो definitely. ईश फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग की क्वालिटी पर एक स्ट्रॉन्ग क्लेम किया है एंड दैट इज नाउ बीइंग रीशेयर्ड ऑल ओवर द इंटरनेट Yeah. थैंक्स टू अल हिलाल्स विन ओवर मैनचेस्टर सिटी. वाकई में ये जो रिजल्ट था ये काफी शॉकिंग था, है ना? 100% यार, nobody was expecting this result. मैं तो मैनचेस्टर सिटी को फेवरेट्स मान रहा था to win the FIFA Club World Cup even over a PSG or a Real Madrid. But then वही वही होता है ना, at the end of the day football is won by the team who wants it more. That solid grit, determination, that crazy counter attack play by Al Hilal, and boom यार, they were in the quarter finals. बट ईश अगर हम बात करें सिटी की तो उनके लिए गलती कहाँ हुई? गार्डियोला नॉट ऑप्टिंग टू स्टार्ट विद शेरकी सीम्ड अ लिटिल बिट वियर्ड. लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फ्रेंच खिलाड़ी को शुरू से खिलाया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता? Yeah, so in hindsight, when a team loses, so you look at options, you look at decisions you did not take. So I don't think that not starting Cherki was something which was creating a direct impact. It was their ability to sort of Al Hilal were coming at them in counter attack, and every time they were feeling exposed at the defense, right? सो मतलब हम बोल सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं, ये खेलता तो ये हो जाता. बट एट द एंड ऑफ द डे आई genuinely feel that Inzaghi literally had the game plan correct. Yeah, he had those wingers who were running through pace, and of course, as expected, Manchester City were dominating the game, and a few of the players were also new in the squad. उनको भी टाइम लग रहा था जेल होने में, and this is what Al Hilal capitalized upon, and they had an excellent execution of the game plan. एब्सोल्युटली इफ एंड बट से बाहर आते हैं तो लियोनेल मेसी एंड इंटर मियामी को राउंड ऑफ 16 में पीएसजी ने बुरी तरह से हराया. We did not expect anything, but what did you make of Inter Miami in that second half? आप उनके क्लब वर्ल्ड कप के कैंपेन को अब तक कैसे रेटिंग करना चाहेंगे? यार देखो, see, of course, PSG won 4-0 against Inter Miami, but it wasn't a surprise. Everybody somewhere down the line knew it was going to happen. It was just यार, Inter Miami had Messi, and when you have Messi in your team, anything can happen at any point of time. So just to reflect on Inter Miami's performance, मेरे को ऐसा लगता है that they should feel proud of themselves, because जैसे आप बोल रहे हो, जिस ग्रुप में वो थे and the teams they were facing, I personally did not give them a lot of chance. In fact, मैं तो ये सोच रहा था कि शायद ऐसे वो फोर्थ फिनिश ना हो जाए ग्रुप स्टेज में. But again, they showed what they were made of, and Inter Miami became the first team from the US to beat a European team as well. So काफी records तोड़े, and nothing but they should feel proud. Yeah. Absolutely, Ish. If we do recap of their journey, to qualifying from a group where they had Porto, Palmeiras and Al Ahly, वो भी बिना कोई मैच हारे, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? 100% यार, and again that is why I said that they should feel proud of themselves. Mascherano, actually this will help them in their MLS league campaign as well, because the confidence you take from beating a team like Porto and not losing in the group stage at all. In fact, एक point of time पे they were able to top the group also, अगर वो एक दो गोल ना खाते एंड में. So मतलब बहुत ही अच्छा खेले. लियोनेल मेसी का मैजिक हमारे को ग्रुप स्टेज में दिखा. लुइस सुआरेज स्कोर्ड a lot of goals in the group stages, and they also showed that quality. But again, if you are facing a team like PSG,
in a knockout game, a team which has won the Champions League, the domestic league, the domestic cup as well. So it was matlab, like we discussed in the previous video, a 20% chance, and that too because of Messi. And then har bar you cannot depend on him to sort of get you over the line. बिल्कुल ईश, अब बात करते हैं तो ऐसी टीमों की who are ready to face each other in the semi-finals, and that is Chelsea and Fluminense. दोनों एक दूसरे को सेमीफाइनल में फेस करने वाली है. What's your prediction for this contest? कौन जीतने वाला है और क्यों? यार it will be more difficult than we think यार. Of course Chelsea on paper will be favorites, but we saw the Palmeiras match also यार. वहाँ पे Palmeiras के पास हर एक क्वेश्चन का आंसर था, and in the end today Chelsea got lucky with that second goal जो उन्होंने मारा, and that took them to the semi-finals. They'll be happy. They're earning a lot of money also because every group stage you keep on qualifying. आपका वो prize money almost double होते रहता है. So yes, they've sort of had an easier journey than the team on the opposite side, because यहाँ पे तुम्हारा Manchester City भी बाहर हो गया था, Inter Milan भी बाहर हो गया था, and then of course on the other side of the table you still have a PSG, a Bayern Munich, a Real Madrid and a Borussia Dortmund. So I see them going into the finals, Chelsea. ईश, इसके बाद अब बात करते हैं इस टूर्नामेंट के राइजिंग स्टार की, जो कि है गोंजालो गार्सिया. मतलब इनके he is on an incredible run of form and made it 3 goals in 4 games with his winner against Juventus. लेकिन अब इस स्पेनिश खिलाड़ी को एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. वापसी कर रहे हैं किलियन एम्बापे उनके अगेंस्ट. इफ यू वर Xabi Alonso, would you pick Garcia or Mbappe in the starting lineup for the quarterfinal versus Dortmund? और आपका जो भी डिसीजन हो प्लीज उसे जस्टिफाई भी कर दीजिए. यार तो देखो मेरा डिसीजन बहुत सिंपल है. अगर किलियन एम्बापे फिट है तो देयर इज नो डाउट दैट किलियन एम्बापे शुड स्टार्ट. He was ill in the first half of the FIFA Club World Cup, but we saw him coming from the bench. So if Mbappe is 100% fit, there is no doubt at all that you should start a Kylian Mbappe, because he's a world-class striker. Talking about Gonzalo Garcia, yes, he has proven himself. He has scored a few goals. पिछले मैच में विनर भी मारा. He's got that physical ability, that heading ability. But like अभी like Gonzalo Garcia could be a very good potential substitute going forward, but Kylian Mbappe ko we cannot write him off, and probably not give Gonzalo Garcia a start if both of them are fit. अब बात करते हैं Serhou Guirassy की. He netted a brace in Dortmund's win over Monterrey. He was also the joint top scorer in the Champions League last season. क्या आपको लगता है कि क्या आपको इस बात ने सरप्राइज नहीं किया कि समर ट्रांसफर विंडो में उनके लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया? मल्टीपल प्रीमियर लीग क्लब्स आर ऑन द लुकआउट फॉर अ स्ट्राइकर, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने क्लब में इंक्लूड करने के लिए उस तरह से सोचा ही नहीं. अगर आपको एक प्रीमियर क्लब चूज करना हो उनके लिए, तो वो कौन सा क्लब होगा जो कि उनके लिए बेस्ट साबित हो सकता है? यार ऐसे मतलब इट्स सरप्राइजिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ क्लब्स, यार बहुत सारे ट्रांसफर रूमर्स नहीं आ रहे गुइरासी पे, एंड आई थिंक ही लुक्स हैप्पी एट डॉर्टमुंड. नंबर 1. नंबर 2, उसका लिंकअप भी हो रहा है, चाहे वो आदेयामी हो, ही इज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स. नंबर 3, he like joined Dortmund in 2024, तो शायद इस वजह से मे बी नॉट अ लॉट ऑफ रूमर्स आर कमिंग कि अभी 1 साल हुआ है, एंड मे बी इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ न्यू क्लब राइट नाउ. And I heard a few links about PSG wanting to replace Gonzalo Ramos with Guirassy, but again nothing concrete as of yet. A few Premier League clubs were also trying, but again, I think at the end of the day it depends on the player, on how happy he is playing in Dortmund. But yes, he has quality written all over him, goal scoring ability, and that's what he's showing. Absolutely, ईश. अब इसके बाद मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ दिस एपिसोड. तो लास्टली मल्टी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि मेसी 2026 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए किसी कॉम्पिटिटिव लीग को ज्वाइन कर सकते हैं. विल ही रिटर्न टू बार्सिलोना? See यार, Messi to Barcelona will never get over till the time he says कि मैं और नहीं खेल रहा हूँ. And I genuinely think he'll continue with his contract in MLS only, with Inter Miami only. Provided, of course, he'll play for the Argentina team, and if he wants to play the next edition of the World Cup, I think the world would love it यार. Coming to Barcelona, मेरे को ऐसा लगता है यार कि as soon as Messi decides to hang up his boots or decides to retire ना, he will move back to Barcelona, and probably कोई role ले लेगा FC Barcelona में, चाहे वो he becomes a part of the management,
he becomes a technical director or have a direct or indirect role with the club Barcelona. But I think he'll run down his contract or extend his contract with Inter Miami अभी. अच्छा चलो ये एक बार हम फुटबॉल फैंस खुश हो जाते हैं इस चीज को सुन के कि वो बार्सिलोना आ गए, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू यू वो किस पोजीशन पर खेलेंगे? क्या बार्सिलोना मेसी को करंट सिस्टम में फिट करके उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड आई रियली वांटेड टू आंसर इन द सेम कॉन्टेक्स्ट. Yeah, देखो, so again the possibility जो मेरे को अभी लग रहा है for him coming back to Barcelona as a player, मेरे को मतलब 1 to 1% ही मान लो आप मेरी तरफ से. But if Messi still like वो 1% अगर वो सच होता है, so like the answer to this question is wherever Messi wants by, then it will depend upon Hansi Flick, maybe that Dani Olmo position just behind the striker, जहाँ पे like he can create a direct impact, or he can just play the way he's playing in Inter Miami position. आप सेम रखो मेसी की एंड जस्ट चेंज द क्लब यार. थैंक यू सो मच ईश इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए. और एक और मैच के बाद फुटबॉल एडिशन एपिसोड यहाँ आपके साथ खत्म होता है, बट ट्रूली एक्साइटेड नेक्स्ट एपिसोड के लिए. थोड़ा सा हम डिले हो गए इस एपिसोड में, बट जल्दी अब अगले हफ्ते एक बार फिर से आएंगे और आपसे बहुत सारी बात करेंगे. थैंक्स वंस अगेन ईश. थैंक यू सो मच नी फॉर हैविंग मी.